Ladies and gentlemen, esteemed guests and respected participants, welcome to the international webinar on Every Woman Counts, Struggle for Gender Equality and Against Caste Discrimination, organized by South Asia Research Institute for Minorities. I am Zehra, your host for today, and it's an honor to guiding you through this crucial conversation today. As you all know, SARIM is committed to promoting minority rights in South Asia, advocating for equal rights regardless of religion or culture. Today's webinar is a tribute to our dedication to creating a platform for impactful discussions that contributed to a more inclusive society. So our remarkable speakers, Khalida Parveen, Radha Bheel, Shalin, Maria Lawrence, and Rani Kanpur are the champions in the fight for gender equality and against caste discrimination. Their experiences, insights, and activism have made a significant impact in South Asia and beyond. Without further ado, let's welcome our first speaker, Khalida Parveen, a speaker of a true beacon of change, a dedicated social activist, women's rights advocate, and General Secretary of Amoomat Society in Hyderabad, India. Khalida brings invaluable insights for our discussion today. So the floor is all yours. Please unmute yourself, Ms. Khalida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। बहुत बहुत रमजान मुबारक सब लोगों को और मेरे वतनी बहनों को गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। बहुत खुशी की बात है कि आज एक अरसे के बाद फिर आप सबके सामने हम फिर दोबारा इस मौके इनायत किया ऊपर वाले ने। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आज हमको गुफ्तगू करना है, स्पेशली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन कैसा नेग्लेक्ट होती है और उसके ऊपर क्या तशद्दुद होता है, क्या वो अट्रॉसिटीज होती है जिसके लिए वो अपनी आवाजें उठाती है अपने राइट्स के लिए, उस पर हमको गुफ्तगू करना है। देखिए, हम लोग अक्सर हम एनजीओ जो वुमेन से कंसर्न है, हमारा एक नारा जरूर होता है वुमेन एम्पावरमेंट, वी वांट टू एम्पावर वुमेन, ये हमारा नारा होता है। और हमारे अपने जहन में कभी कभी एम्पावरमेंट का मतलब हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली अगर ताकतवर हो गए तो एम्पावर हो गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लिख गए हैं तो ताकतवर हो एम्पावर हो गए, या कोई पॉलिटिशियन हो गए तो एम्पावर हो गए, या कोई अच्छे पोजीशन में अगर वो फाइज हो गए थे एम्पावर हो गए, ये हम समझते हैं। ऑफकोर्स ये सब पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुकम्मल एम्पावरमेंट, द होल हैंडेड बोल सकते हैं कि द ब्लॉट, असल में हमको जो चाहिए क्या है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन हमको ऐसा समझाना होगा कि फ्रॉम हर हाउस टू पार्लियामेंट हाउस, ए वुमन शुड बी एनरोल्ड फ्रॉम हर हाउस टू पार्लियामेंट हाउस इन द डिसीजन मेकिंग प्लेस। तो ये अगर ऐसा हो पाया फ्रॉम हर हाउस टू पार्लियामेंट हाउस, डिसीजन लेने के मौके पर, डिसीजन लेने के फेस पर अगर उसको एनरोल नहीं किया गया एक खातून को, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कोई माने नहीं, डिसीजन चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाना ये चाहती हूँ कि अगर अपने घर में हम एक घर खरीद रहे हैं, घर परिवार वाले, तो उस घर में ड्राइंग रूम में जब डिस्कशन होता, हम ये फ्लैट खरीदेंगे या ये घर खरीदेंगे या ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इस तरह की जो बहस होती है, तो उनके घर के औरतों को सिर्फ किचन में बंद रखना नहीं, चाय बनाते हुए, पकौड़े तलते हुए, कुछ और काम करते, ठीक है, वो भी होना है, लेकिन वो सब करते हुए हमें भी उस टेबल पे बैठना चाहिए जहाँ डिस्कशन हो रहा है। तो वहां के मर्द लोगों को चाहिए कि उसको वहां पर एनरोल करें और डिस्कशन में हिस्सा ले, वो भी बताएं कि इसके अंदर क्या नुक्स है, उसकी ख्वाहिश क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फाइनली डिसीजन जो भी हो, वो हो सकता है कि हस्बैंड की तरफ से डिसीजन हो जाता है उनके पसंद का, या ससुर की तरफ पसंद का हो सकता है, सास के पसंद होता है, किसी का भी होगा, खुद का भी होगा, लेकिन डिसीजन करते वक्त डिस्कशन में उसका इन्वॉल्वमेंट होना। तो अपने घर से लेकर कि हर जगह पे, चाहे ऑफिस हो, ऑफिस में भी, वो जगह पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में, असेंबली में, या बिजनेस में, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग प्लेस में अगर वुमन को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो वुमन का एम्पावरमेंट नहीं है। चंद लोग अगर पायलट बन गए, चंद लोग साइंटिस्ट बन गए, चंद लोग डॉक्टर्स बन गए, तो ये वुमन एम्पावरमेंट का अलामत ये नहीं है। ये एक कंट्री को हम होलसम ये कहेंगे कि ये कंट्री वुमन एम्पावरमेंट का रास्ता है, तो उसका मतलब है कि उस कंट्री में रहने वाली खवातीन बड़े हिम्मत के साथ, बड़े कॉन्फिडेंटली अपने राय पेश करने का मौका करना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन की इंपॉर्टेंट है। अब यही बात हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अब बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी राइज है कि अपने घर के मर्द बच्चों को, मर्द लोगों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो हमारे जहन में ऐसा बैठा हुआ है, और फिर वही लड़कियों को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन कम हो गया, ऐसा खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया। लेकिन हमको चाहिए कि लड़का हो लड़की हो, एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है, और दोनों के अंदर स्किल्स है, दोनों के अंदर कैपेसिटी है, दोनों की एक बराबर से एजुकेशन दे।
अब रही बात मैदान अमल में हम दोनों बराबर हैं, ये कोई खास समझ नहीं आता मुझे कि मैदान अमल में वो अपने चॉइस से कि मुझे ये काम करना है तो वो काम करे, यानी मुझे घर बैठना है तो उसको बैठने दे, या वो जो चाहे वो जो एक लिमिट्स में रहते हुए अपने हुदूद में रहते हुए अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहे तो उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं है पॉलिटिकल बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। अभी हम लोग यहाँ कहते हैं 33% रिजर्वेशन हमको चाहिए पॉलिटिकल मैदान में, हमारा अपना 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन 33% के लिए हम मांग रहे हैं कि देने वाले कौन है, मांग रहे कौन? ये तो सबके लिए राइट है ना। जब माँ के पेट से लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई तो उसका तो राइट है, तो वो राइट्स के साथ पैदा होती है। लेकिन ये जो कल्चर हमारे अंदर डेवलप हुआ है कि रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कि कैस्ट से कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से कि बाहर निकालकर हमारा सही दुनिया की तरफ हमारे बच्चों को लेके आना चाहिए। अपने घर में अपने बाप को अपने माँ की इज्जत देते हुए जब देखता है लड़का, रिस्पेक्ट करते हुए देखता है, मशवरा लेते हुए देखता है, तो उस घर के अंदर पलने वाले बच्चे माँ बाप को दोनों को इज्जत देते हैं। जब अपने घर के अंदर माँ और बाप को बराबर की इज्जत मिलती है तो अब घर में पड़ोस के साथ अड़ोस के साथ मोहल्ले में इज्जत देती है। उस तरह जब अपना मोहल्ला ठीक हो गया तो फिर सोसाइटी होगी, सोसाइटी हो गया तो फिर जो है हमारी कंट्री होगी। इस तरह की जो है ना डेवलपमेंट हम चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कानून हम लड़ने से कानून नहीं चाहिए, बल्कि हमारा जरूरत के तहत हमारे कानून को बनना चाहिए, कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतना सब कुछ कानून हासिल करने के बाद भी रेप्स नहीं रुकते हैं कि बहुत ज्यादा रेप कल्चर डेवलप होते आया और रेप करने वालों को दिल्ली से उनको सजा भी नहीं होती, औरतों के साथ बदसलूकी होती, टीजिंग होता है, सब कुछ होते जा रहा है। और आज नया तमाशा क्या हो गया, साइबर क्राइम्स बहुत हो गए, इसमें ज्यादातर विक्टिम्स जो है खवातीन है, लड़कियां हैं, तो ये क्राइम्स रेट भी बढ़ते जा रहा है लेडीज तरफ। वजह इसका ये है कि डिस्क्रिमिनेशन है, कि कहीं रोकने का दबाने का, ये हमारा अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। इस तरह की जहरियत को हमको एड्रेस करने की जरूरत है, जिसके लिए तालीम की जरूरत है, तालीम के साथ साथ तरबियत की जरूरत है। मॉरल टीचिंग्स हमारे अंदर कहीं ना कहीं लैक होते जा रहे हैं। टेक्निकली हम साउंड हो जा रहे हैं, लेकिन मॉरल टीचिंग्स हमारे अंदर कम हो रही है। तो उससे मॉरल टीचिंग्स के साथ, रिलीजियस टीचिंग्स के साथ अगर हम किसी बच्चों को ये अपने माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बना के अगर दिखाते हैं तो ये हमारे लिए, देश के लिए, हमारे लिए, हमारे घर के लिए, सबके लिए ठीक रहेगा। जी, जिन बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Khalida, for your response and for your unwavering commitment to the cause of equality. So next, please join me in extend a warm welcome to our next speaker hailing from Pakistan. She is the CEO of Radha organization and the chairperson of Dalit Sujag Tehreek. Let's give a heartfelt welcome to Radha Bheel. Radha Bheel, please over to you. थैंक यू अदी, थैंक यू। मुझे खुशी होती है कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो ये लोग जो है मुझे मदद करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मुझे बात करने का मौका देते हैं। अदी खालिदा ने भी बहुत अच्छी बात की है कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर और एम्पावर के ऊपर के, और जो है वो एम्पावर खाली फाइनेंस का नाम नहीं है, या वो जो है वो इकोनॉमी जो है वो उसका जो है ना मतलब ये नहीं है कि उसके पास अगर पैसा है तो वो एम्पावर है या उसके पास ताकत है या पावर है, लेकिन वो सारी चीजें जो अदी ने जिक्र किया है यहाँ पर के उसको फैसला साजी में हक होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये चीजें जो है वो इसी को मैं जो है वो कंटिन्यू रखते ही हम सरकार से, हम अपने जो है वो पाकिस्तान सरकार से ये उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की जब बात आए तो ये सीधा एक मिसाल है कि अभी जो इतनी इलेक्शन हुई है और इसमें बहुत सारे जो है ना औरतों को मधु किया गया है। जैसे यदि आपने कहा कि इतना नहीं औरतों को लिया गया, लेकिन जो लिया गया है उसमें हमारी जो है मुस्लिम अदियां बहुत है, तो हमारी जो है नॉन मुस्लिम में से इतनी औरतें इतनी क्या आई नहीं है। खासतौर पर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो कोई भी रिजर्व सीट पे उन्होंने जो है वो किसी नॉन मुस्लिम औरत को जो है वो आगे नहीं लाया। और नॉन मुस्लिम में अगर हम बात करें गरीब तबका की, जिस तबका से हम हैं, शेड्यूल कास्ट कहो, दलित कहो, उनको जो है वो पिसावा तबका कहो, मार्जिनलाइज्ड कहो, जो भी कहो, लेकिन उन तबके से कोई औरत नहीं आई है। अभी भी सरकार के पास एक और ऑप्शन है कि वो अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को और इस एक हमारे जो ऐसा समझो कि मरहूमी जो ऐसे एक हमारे जहनों में है या हमारे ऊपर जो तारी है अभी वो कि अभी सेनेट आगे है, उसमें अगर एक आध औरत को भी ले आते हैं, गरीब तबका की औरत को लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जो है वो फैसला होगा। और जब वहां आपके फैसले हो रहे हो, वहां असेंबलियों में आपके फैसले हो रहे हो और आप उधर मौजूद ना हो, गरीब तबका की औरत जो है, औरतों की बात हो रही हो, वहां पर अगर गरीब तबका की कोई औरत मौजूद ना हो तो वो उसकी आवाज कैसे जो है बनेगी और उस तरह उसकी आवाज कैसे ऐवानों तक जाएगी, या फैसला साजी में उसकी आवाज कैसे मेंशन होगी, या उसकी आवाज कैसे जो है वो बजट में होगी कि उनके साथ क्या मसाइल हैं। क्योंकि हर औरत को ये नहीं पता, क्योंकि जो महलों में रहने वाली औरत जिन्होंने इन लोगों ने जिन लोगों औरतों को लिया गया है अभी रिसेंटली, वो तो एक मतलब ऐसा समझो कि सोने का चमचा लेकर जो है ना पैदा हुई है, तो उनको क्या पता कि गाँव में औरत के साथ क्या मसला है,
पे जो एक हारी औरत है या एग्रीकल्चर की जो औरत है, आज मैं आपको बताऊं कि आज हमारे मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा भयानक एक हुआ है, मतलब मंजर कि एक औरत जो थी वो बागड़ी कम्युनिटी की थी हमारी, मतलब एक गरीब तबका की, जैसे शेड्यूल कास्ट दलित औरत थी। उसको डॉक्टर जो वहां की गायनों में थी तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ना बहुत दिन है अभी, क्योंकि उनको जो है ना डिलीवरी नहीं करनी थी उसकी। तो वो औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, आप मेरी डिलीवरी करवाएं। तो उन्होंने जो है ना उसको धक्के देके बाहर निकाला है। अभी आप देखें फेसबुक पे और खबरों में देखेंगे तो उस औरत को जो है ना बाहर बाहर एक मतलब उस गंद में, और उसमें जो है ना उस एक औरत ने एक कपड़ा डाला है उसके ऊपर, उस बच्चे को जन्म दिया है उसने फुटपाथ पे, ऐसा समझोगे। तो ये कौन आवाज उठाएगा वहां हमारी कि हम लोग जो है ना वो इस तरह से बच्चों को जन्म देते हैं या हम अपने बच्चे इस तरह पैदा करते हैं? क्योंकि जो असेंबलियों में है, वो चाहे वफाक में हो, चाहे मतलब सुबह लेवल पे हो, वो आगा खान और इस तरह की अस्पतालों के बगैर तो वो बच्चा नहीं पैदा करती, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री जाके पैदा करती है। तो उनको क्या पता कि हम बच्चे फुटपाथ पे पैदा करते हैं, उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। इसी तरह जो हम हमारी आवाज जो है वो इस तरह दबी जाती है। और बाकी जो है वो एग्रीकल्चर में जो काम करती हैं औरतें, उनको उनको अगर कोई जैसे कि बारिश वगैरह होती है, कोई इस तरह से तूफान वगैरह आते हैं या कोई बरसात वगैरह होती है या फ्लड वगैरह आता है, तो वहां पर उनको जो है वो, क्योंकि वो हारी है, और उनको जो है वो कहते हैं कि भाई आप लोग फुटी चुनो या मिर्ची चुनो या जो है ना भिंडी चुनो, इस तरह के जो है ना उनको कहते हैं कि भाई आप काम करो, क्योंकि वो उनको तो फसलें खराब नहीं करनी। तो वो जो गर्म पानी होता है उसमें वो हामला औरतें जो होती है वो जाके वहां फुटी चुनती है या मिर्ची चुनती है या जाके काम करती है एग्रीकल्चर का। तो आप बताएं कि उस गर्म पानी में, और उसको जो स्प्रे किया जाता है उसका दवा जो लगाते हैं उसको कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो वो उसकी जो बदबू होती है या उसका जो पानी गर्म होता है या उसकी जो एक स्मेल होती है, सारी चीजों की, और हर्ब्स जो होता है उससे हमारी जो हमला औरतें होती हैं उनके बच्चे जो है एक्सपायर हो जाते हैं, और वो बच्चों को जन्म देते देते एक्सपायर करते करते खुद एक्सपायर हो जाती है। तो इनकी आवाज कौन वहां पहुंचाएगा कि हमारे साथ ये भी होता है? तो जाहिर है डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो रात को 11 बजे 12 बजे या फिर 3 बजे 4 बजे जो है ना आप लोगों को उठाया जाता है और फिर कहते हैं कि आप वो इसलिए है कि हम लैंडलेस है, हमारे पास जमीन नहीं है। जब हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास अपनी छत नहीं है, तो हम अपने वोट का हक भी नहीं अदा कर सकते खुशी से या दिल से, या मतलब अपनी मर्जी से हम अपना वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम अगर देंगे तो हमें उठाया जाएगा। और इसी तरह ये आप देखें अभी सोशल मीडिया पे, ये तो शुक्र है कि हमारे पास सोशल मीडिया है जो हमारी आवाज बना हुआ है, अदरवाइज तो पहले तो हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादतियां होती थी, हम ऐसे ही रस्तों में मारे जाते थे, हमारी कोई आवाज जो है वो सुनने वाला नहीं था। लेकिन अभी सुनता तो कोई नहीं है, लेकिन चलो आ जाती है कि सोशल मीडिया पे हमारी आवाज आ जाती है कि हमारे साथ क्या मुश्किल आते हैं, तो वो लोगों को जो है उठाया जाता है। अभी आप देखें इस इलेक्शन के बाद लोगों को जो है उठाया जा रहा है, बागड़ी बिरादरी को उठाया जा रहा है, मेघवाड़ बिरादरी के घर जलाए जा रहे हैं। कल एक घर हमारे जो है वो मोहल्ला जलाया गया है मेघवाड़ बिरादरी का। और इसी तरह हमारे भीलू के साथ भी अभी तुंगो और इस तरह सांकड़ की साइड जो है उन्होंने कहा कि भाई आपने वोट पीपुल्स पार्टी को दिया है तो आप जो है ना उस वडेरे के पास जाके बैठे, क्योंकि हमारे पास आपकी गुंजाइश नहीं है, आप लोग हमें वोट नहीं देते हो। तो इस तरह हमारे साथ बहुत ज्यादतियां होती है। ये आवाज कौन वहां पहुंचाए, और ये आवाज जो है वो वहां ऐवान तक होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई बिल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए, इसके ऊपर कोई लाहे अमल होना चाहिए, जिससे जो है ना हमारे लोग, हमारी औरतें, हमारे बच्चे मतलब महफूज मतलब हो। अभी आपने देखा कि कराची में जो है वो 6 बागड़ियों के ऊपर एक जो है वैन मतलब गाड़ी उसने मार दिया उनको, अभी तक उसकी कोई आवाज नहीं है, उनको कोई तदारक नहीं हुआ, उनका कोई इंसाफ नहीं मिला। इसी वजह से हमारे साथ, हमारे बच्चियों के साथ रेप के केस होते हैं, फोर्स कन्वर्जन के केस होते हैं, मैरिज के केस होते हैं, बहुत सारे हमारे साथ अन्याय होते हैं। उनकी वजह से आज भी आप देखें, मैं आपको ये सिर्फ 3-4 दिनों का सिनेरियो बता रही हूँ, आगे ऊपर नीचे पीछे कहीं नहीं जा रही हूँ। मतलब ऐसा है कि एक गरीब है एक अमीर है, उसके साथ चाहे वो उधर चला जाए या इधर चला जाए, बात वही है उसके लिए। एक जो है वो ताकतवर है, एक कमजोर है, उसके लिए वहां जाओ या इधर जाओ, बात वही है। लेकिन हम चाहते हैं, हम जो सोशल एक्टिविस्ट है वो चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि कुछ हुआ है काम, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सरकार ने अच्छा काम किया भी है और कर भी रही है। लेकिन जब तक हमारी ऐवानों तक आवाज नहीं जाएगी, जब तक हमारे ऐवान नहीं गूंजेगी हमारी आवाज से, हमारे लोगों की आवाज से, तब तक इतना जल्दी और इतना तकड़ा जो है वो इंसाफ मिलना इतना मुश्किल है। थैंक यू। थैंक यू राधा भील, आपने बहुत अच्छी तरीके से आवाज उठाई और आई होप कि ये कंसर्न अथॉरिटी की तरफ जाए. Thank you so much for being a part of this important conversation. Your presence honored us. So now let's extend a welcome to our third speaker, the remarkable Shalin Maria Lawrence, a author, columnist, and intersectional feminist and a social activist. Shalin has dedicated herself to break down barriers and promoting equality. Without further ado, please join me welcoming a warm welcome to Shalin Maria Lawrence. The floor is all yours now. Thank you so much, Khalida ji, Zehra and Radha ji. I mean, everybody, I'm very happy to speak among you today, and let me not take a lot of time because I think one point Khalida ji said was, I just want to reiterate about it. It is about agency. So right now, all the feminist movements across the India or subcontinent, especially Pakistan or Nepal or wherever. So the mainstream feminist discourse talks about empowerment, emancipation, empowerment.
It talks about education, a right to inherit property, or going to job, or wearing certain clothes, or being modern. And they forget that they do not know that modernity does not always correspond to progress or being free. So they think economic liberalization after 90s, they compare it, they equate it to freedom, and it is not freedom, because freedom is only when you have agency to choose. For example, as Khalida ji said, within your household. See, I might have a whole 4 degrees. I could be a doctor, I could be a professor, or I could be anything. But still, am I able to take decisions within my own household? That is the first and foremost priority. And after that, because even economic freedom, it's not achieved right now, because एक काम करती है, कमाती है, और उसके बाद जो ATM कार्ड है, जाके पति के पास जाए, she won't give a husband. So husband will control the money. So this is not like, this is something we don't have agency. And especially think what she said, political representation. Why when I started talking about feminism, I think strongly 10 years before, I spoke about a lot of stuff, because I spoke about period stigma, I spoke about the dowry system, I spoke about a lot of stuff, but that is there in the main course. Okay, that is there in the mainstream feminism, mainstream discourse. But what was not there is political representation of women. That was not being spoken about, because the decision to make decision for the people of India does not lie with women at all. Because the parliament, you see a lot of old upper caste, intermediate caste men sitting and making decisions for women, and you don't have women there. And even if you have women there, women from marginalized caste or like Dalit women are very less, and religious minorities. Because I come under a intersection in India where I am a Dalit Christian, so I have like 3 intersections, and every political party here in India, they make use of women as cheap political laborers, especially Dalit women, because Dalit women form a major part of the cadre problem, because these women sustain the political parties. They maintain the political parties for decades, for almost 50, 60 decades on the grassroots level. They are booth level workers. If there is an election, they are the ones who, spearhead the campaigning. They, go get votes, vote mangte hain, jate hain. Like every day, they give their body and soul, their tears and sweat. But these parties do not give representation to women, these cadres, in their own, upper level. Even the Dravidian parties here in Tamil Nadu, or any party you take in India, upper level में जो भी होता है ना, decision making powers औरतों के पास नहीं है, और दलित औरतों के पास नहीं, कभी भी नहीं. Even Dalit parties are so patriarchal in Tamil Nadu. There are parties like BCK. They say they work for Dalits for a really long time. And when as a Dalit woman, I go and ask them about representation of Dalit women in those Dalit parties, then they troll me, they abuse me, and I'm like, what is happening? Because मेरे भाइयों है, उनसे मुझे solidarity नहीं मिल रहा है, उनसे मुझे support नहीं मिल रहा है, तो दूसरे कास्ट वालों से कैसे मिलेगा? हमको आप पहले तो आपकी तरफ से मिलना चाहिए ना, जो भी इक्वालिटी है वो नहीं मिल रहा है. So Dalit men also, in their political discourse, a lot of times do not include women. They want to patronize women. They want to make use of the work of the women, but they do not want to give the head leadership roles or the decision-making roles to women. They don't want to give the six seats will try, or 6 seats can't even give one to women. No, they just want to give to all men. So iske baad, I don't know what we can talk about. And same thing is happening with all the other parties, Savarna parties or Congress or jo bhi hai. Yahi to hai na? So this is a struggle. So I want to go, I want to have marginalized Dalit women to make decisions for this country. And you see, even in judiciary, when they appointed a lot of CGIs, a lot of Supreme Court judges, women were not there. And then last year, they appointed 5 women judges, not even one from Dalit community. Not even one from the Dalit community. It's not like we don't have Dalit, lawyers or good district magistrates, but you don't want to give that opportunity to Dalits. That's why we talk about caste-based reservations in judiciary, because we do not have that in India. In judiciary, caste-based reservation nahi hai. Collegium system hai. So we want to scrap that and we want judiciary thing. So even the women who get power in judiciary, only the upper caste women get, not us. And then there is a problem. When I talk about intersectional feminism, when I talk about caste, when I talk in the feminism discourse, then again I have a problem not just with the men, but with women themselves who are from the Savarna upper caste, who don't understand my problem. They will come and say, हाँ आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं, काम करने के बारे में बात करते हैं, घर छोड़ने के बात करते हैं. I said, there's no need for me to ask permission from my man or my family to go out, because we are working class, urban working class, very marginalized. I am born as a working class. So as soon as I am like in my 12th standard of college, I have to work. There's no need for me to get permission from my parents or husband. But what I do not have is an access to resource. It's access to policies, access to government welfare systems. So what government says is, जो भी है, Indian government or Tamil Nadu government,
They just go ahead and say, हाँ नारी शक्ति, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, इतना सारा करोड़ डाल रहे हैं, 1,000 this how much, 1,000 crores, 2,000 crores. Yes, to which mahila? To which mahila? As she said, mobility is a problem for Dalits. Mobility is a problem because we are a poverty, because we are very poor. So accessing the resources, accessing water is a problem. For a Dalit, we talk about the children dropping out of school, and then we talk about how Dalit children, especially Dalit girl children, drop out of school because they have to travel every day 5 kilometers back and forth in India to get water. So Dalits live outside the village. They don't live inside the village. So also water is inside the village. So they have to travel 5 kilometers. And they travel 5 kilometers. Then they don't use the boys. Boys go to school. Girls have to drop. And they have to fetch water. They have to take care of their brothers, sisters, because their parents will, go to daily wage, they're daily wage workers, they're laborers. So the girl children, at the end of the day, it comes to her to take care of herself. And while she's accessing the resources, like education, like water, or what any government policies like ration or anything, when the Dalit child or Dalit teen is accessing it, since she is alone and she's traveling, for a far way, she's coming from a distance, the violence on her is more. The violence. Because they take advantage of their, isolation. They take advantage of their, poverty, the impurity within the police. As I said, so many rapes. And when India, and for me, rape is a rape. Rape is very horrible. And every time I talk about rape, I feel very traumatic for even a month. But India, if an upper caste person gets raped, then it's okay. Everybody will start shouting vigilance, candle march, everybody will speak about it. But if a person from Dalit community, a Dalit woman gets raped, which is a common phenomenon, it's like normalized. And Dalit women are the most gang raped in India. Among 90 cases, among 100 cases, 90 cases of gang rapes in India happen on Dalit women, Dalit children. And then nobody speaks about it. And then I'm like, हाँ यार, आप तो निर्भया के बारे में इतना बात कर रहे थे ना, तो तुम्हें, इसके बारे में भी बात कर, it's happening on every day. There was one निर्भया, but against 100 Dalit women here, they're not talking about it. And they just don't care about it. Like, so as if like my body is not, valuable. Is my pain not your pain? There's this famous saying called aren't I a woman? The same thing only, aren't I a woman? So every time it's a question of भारत के नारी, हाँ मेरे पास वोट है, मेरे पास ये है जो है, लेकिन आपके पास मेरे लिए इतना जो इंसानियत है आपके मन, इतना जो इंसानियत है, इक्वालिटी है, no, I'm just a vote for you, right? I have one vote, and thanks to Ambedkar, thanks to Baba Saheb, I got the voting right. If not for voting rights, you would have enslaved all women and put us behind prison and made you do work and all, like on slave bonded labor. But it's still happening. But a lot of us escaped it because we have voting power, we have right to education, because the constitution is there. I think the whole Dalit woman movement, rights, everything stopped with the constitution, stopped with Ambedkar. After him, nobody literally did anything for women's rights. After him, the Hindu Code Bill, whatever he brought in for agency, for bodily autonomy, for right to inheritance, consent, non-trafficking rules, a lot of reservation, affirmative actions, everything is only possible because of Ambedkar. After him, what happened? He died in 1956. After that, 50, 70 years have passed. What have you done for the woman? The problem is extended beyond apprehension. The issues are, it's modernized. Caste has been modernized. We are on social media. As I said, we are on social media. At least we are able to write what we go through, right? And then the attacks are thousandfolds more than what upper caste woman faces. They will make fun of her face, they'll make fun of her religion, they'll make fun of her caste, they'll slut shame us, and then you will not get any support from men, especially your own blood. They'll not support you at all. So you have to fight alone. So the trauma, I'm a Dalit woman, so whatever degree I complete, whatever work I do, whatever internationally I'm placed at, nobody cares about it. It's like, you're a Dalit woman, we can do anything with you, we can call you any names. Police will not attend your complaint, judiciary will not give heed to you, or your own people will not even give you sorry time. And a lot of men do not like outspoken women at all. If you talk about education, if you talk about jobs, they're okay. And if you talk against BJP, if you talk against fascism, they're okay. But once you talk about representation in their own party for you, they'll get aggravated. They cannot take assertive women, and they cannot take women who are even religiously strong. Because I think my religion is my political identity. I converted for a political reason. So whenever I assert that, they do not like it. For example, there is Suraj who does not like Dalit Christian. I'm like, why do kya kar rahe ho? Hum log saath mein hain isme. They're all together. But you're talking like this. So there's a lot of internal fight also which happens, and a lot of people do not like Dalit women speaking, including Dalit men. They do not like them having agency or power. They say, follow me, follow me, follow me. Hum lead karte hain. They don't take advice from women at all. They don't. So first we have to clear up our own system
where gender equality is not happening and equity has to happen here, and then I'll get the strength to fight the upper caste people, the dominant caste people, to fight the state. I need the strength. I need the strength. I need the solidarity. So this is something which I really want to put. I agree with you totally. Thank you for sharing your experience and valuable insights. I hope let's continue working together where world and every woman's struggle is acknowledged and uplifted. Thank you for joining us today. So last we have Rani Kanpur, a fearless Dalit activist and founder member of Dalit Sahegita Manch in India. Her dedication to justice and empowerment is an inspiration for all. Miss Rani Kanpur, please unmute yourself. बहुत बहुत धन्यवाद साउथ एशिया के ऑर्गेनाइजर के लोगों को, और जो हमारे पुराने साथी पिछले अभी बोल चुके हैं उनको भी सारे लोगों को धन्यवाद। तो साथियों, जो एक बहुत बड़ा जो साउथ एशिया के लोगों ने ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा इशू है महिलाओं को लेके। और हम अगर देखें पूरा सिस्टम जो देखें, और तमाम सारे हमारे ऑर्गेनाइजर भी हैं, जहाँ पे अभी मेरे पुराने साथी जो पिछली बार अभी बोल चुके हैं, उन्होंने कई चीजें बहुत अच्छी कही हैं कि एक तो महिलाओं की कहाँ पे पहुंच है। आप अगर सिस्टम में देखिए, हम और जगह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने एनजीओ सेक्टर में लोगों ने खुद अपना वो बना रखा है पूरा कि हम फला संस्था से हैं, फला संस्था में काम करते हैं, है ना, लेकिन उनकी उसमें भागीदारी कितनी है, डिसीजन मेकिंग में उनकी कहाँ कितनी चीजें हैं, कौन महिला प्रमुख है अभी संस्था में, नहीं, आप गिने चुने उंगलियों पे आप गिन सकते हो, है ना। मतलब वो संस्था में तो है, मेंबर्स है, सब कुछ है, लेकिन उसका पूरा जो सिस्टम है वहां पे जो पैसे का लेन देन है, या जो लोगों को उसमें अपना अपॉइंटमेंट करते हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, किस तरह से रखना है, वहां कोई उनका वो कोई अस्तित्व नहीं है, ना के बराबर है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं तो संस्थापक भी अपनी संस्था के हैं, है ना, और खुद से डिसीजन लेते हैं और महिलाओं को भी बाहर निकाला है। और मेरा एक काफी लंबे समय का एक अनुभव है, लगभग 40 साल तक तो हो रहे होंगे एज ए चाइल्ड लेबर, है ना। तो मुझे महिलाओं की जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को ये करना ये करना ये करना, तो हमें ये 2-3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा महिलाओं को आगे लाने के लिए। सबसे पहले जो हम जाति धर्म और इसमें जो बंध हैं, है, तमाम सारे हमारे जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, हिंदुवादी लोग हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो फला पार्टी या जो भी है, वो हर जगह पे है हिंदुवादी मानसिकता के लोग, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे किसी कम्युनिटी में हो, वो मुस्लिमवादी भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा। आज हम तमाम लोगों के वो सेलिब्रेट करते हैं कि आज अम्बेडकर का जन्मदिन है, आज सावित्री वो ज्योतिबा का है, सावित्रीबाई का भी, हमारे दलितों में एक जागरूकता आई है कुछ दशक से। लेकिन आज भी हम देखते हैं जो तमाम सारी हमारी मुस्लिम महिलाओं ने फाइट किया इस देश के लिए, इस समाज के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, फातिमा भी जैसे लोगों ने किया है, तमाम सारी महिलाएं हैं, इसमें क्रिश्चियन में भी हैं, मरियम जैसी, उनका कहीं मतलब कोई वो नहीं, यीशु की तो हम बात करते हैं लेकिन मरियम की बात नहीं करते हैं ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें कहीं ना कहीं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, और अपने गांव में मोहल्ले में, जैसे अभी हमारी बहन खालिदा जी ने बोला जो, कि हमें उन चीजों को लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उन महिलाओं को, उन औरतों को, क्योंकि एजुकेशन तो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। मुस्लिम के अंदर भी वो हम देख रहे हैं, महिलाएं हमारे यहाँ हाँ आज स्कूटी से जा रही है, लेकिन वो अपने नकाब के साथ जा रही हैं, कायदे से जा रही हैं, उनको वो नहीं कर रहे हैं, वो उनका अपना एक रहन सहन का तरीका है। हिंदुओं में भी महिलाएं तमाम सारा डॉक्टर इंजीनियर मतलब सब बन रही हैं, लेकिन उनको महिला डॉक्टर इंजीनियर सब बन रही है, लेकिन उनका कोई पहचान नहीं है ना, बस घर परिवार यही सीमित है। और जो डिसीजन मेकिंग में बैठी है सरकार में महिलाएं, उनको भी आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्थिति बहुत खराब है इंडिया की, है ना, कि आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सबसे ज्यादा टॉर्चर महिलाओं को किया जाता है ना, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे घर की महिलाएं होती हैं, हमारे बच्चे होते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हम जागरूकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम भी जागरूक करते हैं लोगों को कि आप पढ़ाई कराओ, अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाओ, स्वास्थ्य करो, इनका साफ सफाई रखो। तो मेरी वो एक सीमा नहीं है, जब हम किताब से हट के पढ़ेंगे, जो इंसानियत की बात हम लोग करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन हमारे संस्कार कौन, हमारे हिंदुवादी संस्कार नहीं चाहिए, हमें मुल्लावादी संस्कार नहीं चाहिए, है ना, हमें एक बराबरी के संस्कार चाहिए, हमारे बराबरी की एक शिक्षा चाहिए। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम बेटी को भी पढ़ाएं। अभी हमारे यहाँ यूपी के ही अंदर एक केस हो गया, गैंग रेप हुआ, और अभी 1 हफ्ता हुआ, ज्यादा दूर नहीं है जहां से हम रहते हैं, यहाँ से मुश्किल से 150-200 किलोमीटर दूर है। तो अभी क्या हुआ, वो दोनों बहनों को गैंग रेप करके मार दिया गया, और फिर उसके फादर ने भी फांसी लगा ली, उन 2 लड़कियों ने भी फांसी लगा ली। लेकिन आज तक अभी उस केस का कहीं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ कि वो तीनों पकड़ गए। और लास्ट में बताया कि वो नहीं, वो परिवार के ही लोग हैं, सब एक दूसरे से, और बिहार नवादा से आए थे, क्योंकि वो लोग आते हैं, ये जैसे ही दीपावली का वो सीजन शुरू होता है, वो लोग आ जाते हैं, 5-6 महीने यहाँ रहते हैं,
बीवी बच्चे बाल बच्चों के साथ पूरा परिवार आता है, और उनका जो ठेकेदार है वो मनमानी अपना करता है। इस तरह के मतलब ये तो खाली एक उदाहरण अभी जस्ट का है ना, एक हफ्ते भी अभी नहीं हुए होंगे। और मीडिया के लोग भी कोई उस तरह का सवाल नहीं, मीडिया में भी कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी मीडिया ने तो इतना हम लोगों को बांध दिया है कि अगर आपके एमपी में कुछ हो रहा है तो एमपी वालों को वहीं के खंडवा में नहीं पता चलेगा कि कहाँ हो रहा है, जबलपुर वालों को खंडवा का नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हुआ ना। तो ये दो बहन अभी कह रही थी कि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, जहां से हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी खबरें मिल जाती हैं। तो हमें लगता है कि हमें जो एक प्लान करने की जरूरत है, तो जो पूरा साउथ एरिया है, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब हमारे नाली सड़क खरंजे नहीं है, हमारे डेवलपमेंट का मतलब है हमारा मानसिक विकास, है ना। हमारा भौतिक विकास, जब हम मानसिक विकास करेंगे तो हमारा भौतिक विकास भी होगा। जब हमारे संसाधन हमारे पास होंगे और उन संसाधन को कैसे यूज करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो यही मोटा मोटी बात है कि मतलब हमें उन सब चीजों को करने के लिए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और साउथ एशिया का पूरा, साउथ एशिया में हमारा चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, मतलब जितना गरीबी तबके के अंदर है, हम दलित गरीब कब तक चिल्लाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि हमें चिल्लाने से हक मिलेगा, मुझे उसके लिए एक्शन में आना पड़ेगा। तो साथियों यही हमारी बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे एक्शन में आना पड़ेगा और अपनी मांगों को लेके, जैसे WSF में हम लोगों ने अपनी बात रखी, उस तरह से यहाँ पे भी हमें रखने की जरूरत है और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ेगा। और ये जो हमने अभी बोला कि महिलाओं को, चाहे वो दलित महिलाओं की महान नायक हो जो संघर्ष किया है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की हो, चाहे वो अगर, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान मान लिया गया है, जबकि उसमें हमारे क्रिश्चियन भी है, हमारा ईसाई भी है, सब बौद्धिस्ट भी है। तो हम उनको भी साथ जोड़ने का, और उनकी भी जो चीजें हैं, जो हम लोग कहते हैं कि अभी जैसे यहाँ इंडिया में सारा सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो वो चेंज कर रहे, ठीक है, लेकिन वहां हमारी चीजों को भी उसमें डाला जाए, शिक्षा के उसमें, कि हमें ये चीजें चाहिए। हमारे इन महिलाओं का जो महापुरुष है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, मतलब किसी कम्युनिटी के हो। तो यही साथियों हमारी बात थी, और अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। और एक अच्छा है साउथ एशिया के लोगों ने जो फोरम आज जो मीटिंग करी है, और इस मीटिंग को हम चाहते हैं कि इसमें एक मैनिफेस्टो, एक सॉलिड काम हो, है ना। तो इसी के साथ साथियों हम अपनी बात समाप्त करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। Thank you, Ms. Rani Kanpur. I totally agree with you. Let's work together to make our world more fair and welcoming. Thank you for being a part of this effort. Before moving on the concluding remarks, I want to express the gratitude to Khalida Parveen, Radha Bheel, Shalin, Maria, and Rani Kanpur for their enlightenment, insights, and commitment to the cause. Here the concluding remarks from Rimsha Shahid, a research analyst from South Asia Research Institute for Minorities. Rimsha, the floor is now yours. Thank you so much. As we bring this webinar to a close, it is crucial to reflect on the significance of the topic we have explored together today. The intersectionality of gender and caste is not merely an academic concept, but a lived reality for countless individuals across the globe. Our discussions have delved into the heart of the matter, uncovering the layers of discrimination that women face when navigating both gender-based and caste-based challenges. The significance of this topic lies in its power to explore the often overlooked and intersecting dimensions of oppression by recognizing and addressing the unique struggles faced by women who find themselves at the crossroads of gender and caste. We all together take a significant step towards the dismantling systemic inequality. So yes, this webinar serves as a platform to amplify voices that are often silenced, to foster a deeper understanding of the multifaceted nature of discrimination. So it is incumbent upon us together as individuals and as a society as well to confront these issues head on. The experiences shared today by all the esteemed speakers underscore the urgency of dismantling discriminatory structures and fostering environments that empower every woman, regardless of her caste and background. So yes, the first speaker, Khalida Parveen, discussed about the subject of a male-dominant society and the challenges confronted by women. She explored the concept of whole empowerment. According to her, the authentic essence of women empowerment lies in a woman being enrolled with the authority to make decisions starting from her household to parliamentary house. If a woman lacks the freedom to make decisions, she cannot be considered empowered. Khalida emphasized the important role of education in achieving true empowerment, highlighting its significance not only for women but also for men as well. Both segments, according to her, need education to understand the importance of empowerment, fostering an atmosphere of respect within the household and society.
Moving ahead, the second speaker, Radha Bheel, continued with the perspectives and opinions presented by Khalida Parveen. Radha emphasized the need for government initiatives to empower marginalized societies. She highlighted that women from these marginalized communities are inadequately represented in assemblies and in decision-making bodies. This unrepresentation poses challenge in raising voices and formulating policies that address the actual challenges faced by women at the local level. Radha also shed light on the grave maternal condition and the insufficient healthcare facilities encountered by these women, particularly in rural areas. She also drew attention to the exploitation of rights and situations of oppressed people by feudal lords and urged the government to take appropriate initiatives in response to these issues. Our third speaker, Shalin addressed the discourse surrounding empowerment in South Asian countries. She pointed out that while conversations often focus on empowering women in terms of education, employment, or other avenues, the crucial element is the agency to make decisions. Shalin emphasized that economic empowerment alone does not guarantee freedom to make decisions. Turning to the political representation of women, she highlighted a significant lack, particularly among women from lower caste, contributing to a substantial gap in the equal provision of fundamental rights. Shalin also underscored the role of Dalit men in overseeing their authorities to create societal change within their communities. She asserted that caste-based reservation is imperative at the present moment to address these disparities. Last, our final speaker, Rani Kanpur, emphasized the profound significance of the topic, noting that women face oppression across various domains. She mainly focused on NGO realm and highlighted that comparatively lower representation of women in decision-making processes. She underscored the pervasive influence of a male-dominant society and stressed the necessity of understanding its root causes for effective eradication of this dominancy. Rani advocated for open discussions on these issues with local women, aiming to foster an understanding of their fundamental rights to make decisions within their households and participate in economic and political spheres. She said that society direly needs the values that respect each other rather than respecting only male segment of the society. So yes, while concluding this webinar, the struggle for gender equality and against caste discrimination demands our unwavering commitment to justice and equality. And as we move beyond this virtual gathering, let us remain steadfast in our dedication to challenge stereotypes, dismantling biases, and fostering environments where every woman can thrive. This issue is not confined to the walls of a specific society or community, but extends into the very fabric of every community and society. Therefore, breaking down the barriers that limit the potential of individuals and forging a path towards a future where every woman truly counts is important. Thank you for your engagement, and may our collective efforts contribute to a more just and equitable world. Thank you again for your participation and dedication. Over to you, Zehra. Thank you, Rimsha. Your remarks have been enlightening and inspiring. As we conclude, let's carry the torch of gender equality and anti-caste discrimination forward. Working towards a future where every woman's contribution is acknowledged and celebrated. Thank you all for joining us today. Let this webinar be catalyst for the change. Together, we can make a difference. Goodbye and stay committed to the cause. Thank you so much for joining, everyone. Thank you. Take care. Take care of yourself.